Assalamualaikum. This video introduces probability density function. If you like, then share this video within your community. Subscribe to get the latest update from this channel, Economic Galaxy, and don't forget to click on the bell icon. In this presentation, I am going to focus on the probability density function. What is probability density function? आपके सामने एक डेंसिटी फंक्शन दरअसल लिखा हुआ है. That is the density function of binomial distribution. Binomial distribution में हम क्या करते हैं? F of y given that n in w. W is the probability of success and the distributional function is in n factorial. Basically, in econometrics, we write the data as y. We write y given that number of observation, number of trials, and w is the probability of success. So n factorial divided by y factorial into n minus y factorial w raised to by y into 1 minus w raised to n minus y. W is the parameter. अगर आपको कहा जाता है कि सपोज करें we are following the n experiments, we repeat that experiments 10 times, n will be 10. So the probability of success w. If suppose करेंगे 0.4, so what is the probability of 1 success? What is the probability of 2 success? What is the probability of 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 success? And the maximum are the 10 success. मतलब 0 से लेकर 10 तक हमारे पास सक्सेस आ सकती हैं. तो यू कैन फाइंड आउट द सक्सेस ऑफ 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0. Probability of 1, 2, 3, 4 and the probability of 10. Now this can be probability of success. It depends what's your success level. अगर आप कहते हैं कि सक्सेस ये है कि आप हेड और टेल वाले पॉइंट्स को टास्क कर रहे हैं और हेड की प्रोबेबिलिटी को आप 0.4 कह रही हैं, सो डैट इज़ योर सक्सेस. अगर आप कहते हैं कि आप कोई ऐसा ट्रायल कर रहे हैं जहाँ पर डेथ के 4% दरअसल चांसेस हैं और सर्वाइव के 6% चांसेस हैं, सो डेथ प्रोबेबिलिटी इज 0.4. इट डिपेंड्स हाउ इट इज़ गोइंग टू डिफाइन योर सक्सेस. What is the PDF of normal distribution? नॉर्मल का PDF क्या होता है? बाइनोमियल के पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं? n and w. तो these are the parameters of binomial. बाइनोमियल का मीन क्या होता है? And what is the variance of binomial distribution? Inverse problem. Given a set of parameters value, the corresponding PDF will show that some data are more probable than other data. In the previous example, the PDF with w is equal to 0.2, y is equal to 2 is more likely to occur than y is equal to 5. In reality, however, we have already observed the data. Accordingly, we are faced with an inverse problem. Given the observed data and a model of interest, find the one PDF among all the probability density that the model prescribed that is most likely to have produced the data. There are two types of distribution, continuous distribution and the discrete distribution. Binomial is the discrete distribution, जिसमें y value is equal to 0, 1, 2, 3, 4. While the normal distribution is the continuous distribution. अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब आपने डिस्क्रीट की वैल्यू निकालनी है, मतलब सपोज करें कि यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ y is equal to 2, n is equal to 10, तो put it into the formula probability of success w is equal to 0.4.
Likelihood function. To solve this inverse problem, we define the likelihood function by reversing the rules of the data vector y and the parameter vectors w in. Thus, ये equations आपके सामने मौजूद है. Represent the likelihood of the parameter w given the observed data y and as such is a function of w. For the one parameters binomial example, the likelihood functions for y is equal to 0.7 and given 10 and बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में जो टू की प्रोबेबिलिटीज़ को हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास ये इशू और तरह है. कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को हमें एक तो स्पेसिफिक पॉइंट पर उसकी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं मिलती, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट 2 है तो इस पर यू कॉन्ट फाइंड आउट द बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट 2. कंटिन्यूस उसको डील करता है 2 से ऊपर और नीचे. अगर आपको y2 से लेकर y4 के दरमियान आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इंटीग्रेशंस का मेथड दरअसल इस्तेमाल करना पड़ेगा. लेकिन ये इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो इतना कम्प्लेक्स है कि इसे हर इंसान सॉल्व नहीं कर सकता. तो जब इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उन्होंने कहा कि हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम इस इंटीग्रेशन प्रोसेस को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं. और स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का ये रूल है कि आप y में से उसका मीन दरअसल माइनस कर देंगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो वो एक स्टैंडर्ड वेरिएशन बन जाती है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.